Okay, guys. So for today's class, we are going to learn about oxidation and reduction reaction. And in the previous classes, we have already covered, uh, factors affecting the rate of chemical reaction, and we also saw how nature of the reactant affects, or like we saw the physical change and chemical change, also how rusting occurs, how all the things as also occur. Now today, in today's class, we are going to understand the more of a kind of a chemical reaction, I would say, the kind of chemical reaction, that is oxidation and reduction. So before we just simply go ahead with the definition of these two, I will explain this with the other examples. Okay, so what happens? So we are very curious to know, like, in general life, also in real life, how oxygen play role in our life, okay, in different things, like when we like inhale the oxygen, right? In respiration, oxygen is there. Okay, in respiration, oxygen is there. Different kind of reaction is like photosynthesis. Basic example as photosynthesis, oxygen is there. So, like, different reactions are taking place and oxygen is a part of them. Okay, so similarly, uh, if you just if you just observe here, like the different reactions you can see here, some of these are like, like okay, for now, just understand, just observe the reactions. Okay, observe the reactions, what is happening. Okay, what is happening. Now I'm going to show you another picture here. Okay, so let's understand it this way. Suppose in a चाइना डिश, ओके, एनी कंटेनर है जिसमें हमने कॉपर पाउडर रखा है. कॉपर पाउडर मतलब सीयू का पाउडर रखा हुआ है. ठीक है, सीयू. ओके, कॉपर कॉपर पाउडर रखा है, पाउडर फॉर्म में है, और उसे हम बर्न कर रहे हैं. वी हैव टू बर्न इट. ओके, वी हैव टू बर्न इट. नाउ बर्निंग के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है बर्निंग के लिए? व्हाट डू वी नीड फॉर बर्निंग? Fire. We need fire, right? And in like burning happens in presence of what? Fire में क्या presence होता है जिसमें burning होती है? Yes, CO2. is that like this? Are you sure CO2 is there? Okay, so we have already learned this before, and that we know that oxygen is present. Oxygen is present in burning. Okay, burning happens in the presence of oxygen only. So we know this, that oxygen will be present, and then the burning will happen. Okay, then the burning will happen. Now here, okay, so here, so अभी क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ इसकी बर्निंग होने वाली है. So let's see you, let's observe this first. So observation, let's just think about it. So surface of copper powder becomes coated with black copper oxide. We have already learned that metals react with oxygen and form metal oxide. क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं. जो ऐश निकल के आता है, जो उनका प्रोडक्ट रेसिड्यू जो बचता है ना, वो क्या होता है? मेटल ऑक्साइड होता है. तो ओके, सो कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपेंड? वो कॉपर ऑक्साइड क्यों बन रहा है? कैन यू एक्सप्लेन व्हाई डज दैट हैपन? क्या होता है? व्हाट हैपेंस इन दैट रिएक्शन? व्हाट हैपेंस देयर? एनीवन? Yes, anyone, guys, wants to explain? Okay, CY Singh, oxygen. Okay, I think this is the previous thing only. So okay, so what happens there is, let me explain you this part. Okay, it's easy and let's understand it. So what happens, ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है कॉपर में, और कॉपर ऑक्साइड बनता है. कैसे बनता है? फॉर एग्जांपल, ओके, फॉर एग्जांपल, कॉपर है, ठीक है, कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया है O2 के साथ. बर्निंग में, याद रखना, बर्निंग में, कंबशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तभी बर्निंग होती है, अदरवाइज फायर विल नॉट कैच. अगर आप वैक्यूम में आग जलाने की कोशिश कर रहे हो तो कभी आग नहीं जलेगा, बिकॉज वहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. CO2 का काम होता है आग को बुझाना, और ऑक्सीजन का काम है आग को बढ़ाना. ओके,
तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसे हीट कर रहे हैं, कॉपर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं. सो व्हाट इज हैपनिंग, द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्मिंग C2CO, तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 कर देंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग, द कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्मिंग. तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि कॉपर में ऑक्सीजन इज एडेड, कॉपर में ऑक्सीजन इज एडेड हियर. यहां पर देखो कॉपर के साथ ऑक्सीजन आ गया है, पहले ऑक्सीजन नहीं था, बट हियर वी कैन सी कॉपर विद द ऑक्सीजन. सो वी कैन से ऑक्सीजन इज एडेड विद द कॉपर. क्या हो रहा है, ऑक्सीजन इज एडेड, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ यहां पर, ऑक्सीजन ऐड हुआ यहां पर. ओके, and as the oxygen is added, so this reaction is called nothing but the oxidation. इसे ही हम क्या बोलते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है. क्या बोलते हैं उसे, वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ है. इट इज वेरी सिंपल विद द वर्ड्स ऑक्सीडेशन ओनली, एंड दैट इज oxid means oxygen here, this means oxygen here. Okay, and ation is nothing but the addition. So addition of oxygen in any element, okay, or compound is called oxidation. उसे हम क्या बोलते हैं, oxidation. Addition of oxygen, okay, addition of oxygen is called oxidation. Addition of oxygen is called nothing but the oxidation. Is that clear, guys? Did you get that? Abhi we have to learn a lot. Okay, it's just the basic we are doing right now. So did you get somewhat meaning of it? Okay, great. Now let's go ahead and understand more on it. Okay. Okay, so some more examples I have kept here. Okay, and you can observe, if you can observe what is happening here. Here oxygen is added, here oxygen is included. देख रहे हो कंपाउंड में ऑक्सीजन आ गया है, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऑक्सीजन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं. एंड हियर समवेयर, हियर कुछ कुछ एग्जांपल्स में क्या देखने को मिलेगा कि ऑक्सीजन कम हो गया है, एक ऑक्सीजन बाहर आ गया है. यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ऑक्सीजन कम हो रहे हैं यहाँ पर, राइट. और सिमिलरली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या देखो जिंक से हट गया है, यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्साइड ऑक्सीजन आ गया है. सो बेसिकली these reactions are oxidation and reduction. These reactions are oxidation and reaction where oxygen is added, that is called oxidation. कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है. और जहां पर ऑक्सीजन बाहर आ गया है, वेयर ऑक्सीजन बाहर आ गया है, that is called nothing but the reduction. We call it reduction. मतलब कि कुछ ना कुछ रिड्यूस हुआ है. तो यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है. That's why it is called reduction. This is called reduction here. Okay, so is that clear? Is that clear, guys? Did you get it? Yes. What about others? Guys, what about others? Okay, we can have more examples. Okay, let me see what. Okay, perfect. Okay, so here I am going to give you the words oxidation and reduction reaction. So when oxygen is added, that is called oxidation. When oxygen is added, that is called oxidation. Okay, याद रखना. And when oxygen is removed from the compound or the reactants, that is called reduction process. कुछ ना मतलब कि reduce हो रहा है, oxygen reduce हो रहा है, so that is reduction. Oxygen add हुआ है तो called oxidation. Okay, so अभी ये समझा हमने, ठीक है. अब कुछ और थोड़ा सा समझते हैं, अभी और एग्जांपल हमें समझना है, ठीक है. अभी यहाँ पर ये कन्वेंशनल डिफिनीशन कहलाता है, बहुत पुरानी डिफिनीशन है. क्या है ये, कन्वेंशनल डिफिनीशन है, बहुत पुराना. मतलब कि जब हमने समझा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, देन वी कंसीडर्ड ऑक्सीजन ओनली. इन दैट टाइम वी कंसीडर्ड
ऑक्सीजन ओनली, कि ऑक्सीजन के एडिशन और रिडक्शन को हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। फिर हमारे पास और भी एग्जांपल्स आए, वी हैड मोर एग्जांपल्स एंड देयर वी कंसीडर्ड, okay, let me first explain you this in a way. Okay, there we considered hydrogen also, so let's understand that as well. So here what I'm saying, oxygen, when oxygen, okay, when oxygen is added, when oxygen is added, then it is oxidation, then it is oxidation, right? Oxidation. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, सब माइनस कर दिया, तो देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन। सो एक और पॉइंट आता है इन दोनों में ही, कि ऑक्सीडेशन को हम ऑक्सीजन बस के टर्म में ना डिफाइन करके कुछ और भी तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, एंड दैट इज व्हाट, हाइड्रोजन के साथ डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन डिफाइन इट विद द हाइड्रोजन, वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड नहीं होता है, हाइड्रोजन रिमूव होता है। सो दिस इज कंप्लीटली अपोजिट टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो देन इट इज ऑक्सीडेशन, बट अगर हाइड्रोजन रिमूव हुआ देन इट इज oxidation, then it is also oxidation. Similarly, when oxygen is removed, then it is reduction, and similarly when hydrogen is added, then also it is reduction. When hydrogen is added, then also it is reduction. Now you can ask me, भैया how does that happen, कैसे होता है ये, ऐसे कैसे हो सकता है कि ऑक्सीजन को हमने हटाया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐड हो गया। सॉरी, यहाँ पर हमने मुझे एडिशन लिखना चाहिए था, ओके, यहाँ पर आई विल राइट एडिशन। नाउ यू कैन आस्क मी हाउ डज दैट हैपन, ऐसा कैसे हो सकता है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन, एंड व्हेन ऑक्सीजन इज एडेड देन इट इज कॉल्ड when hydrogen is removed, then it is called oxidation. So let me give you some other examples, okay, and let's understand it that way. And I'm going to write some examples here, okay. Let's take an example of CH3OH, okay. This is CH3OH, दिस इज मेथनॉल ओनली। मेथिल पता है आपको क्या होता है, दैट इज CH4 को मीथेन बोलते हैं। सो OH इज एल्कोहल ग्रुप, OH इज एल्कोहल ग्रुप, इसे क्या बोलते हैं, मेथनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये जब इसको जब हम डिकम्पोजिशन होता है, इसका जब डिकम्पोजिशन होता है, सो इट बिकम्स लाइक दिस। डिकम्पोजिशन में इसमें क्या होता है, ये सब्ट्रैक्ट होता है तो CH2O बचता है, और हाइड्रोजन क्या हो जाता है, यहाँ पर रिलीज हो जाता है, हाइड्रोजन इज रिलीज। या थोड़ा सा इजी एग्जांपल से ले लेते हैं, थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि क्या फॉर्म होता है यहाँ पर, अगेन कार्बन मोनोऑक्साइड में देखो, कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से देखो, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो या तो उसको उतने ही, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पहले मिलते हैं तो एल्कोहल ग्रुप बनाते हैं, OH ग्रुप बनाते हैं एल्कोहल, और ये कार्बन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, सो दे बिकम CH3OH, अगेन मिथेनॉल बनता है। तो यहाँ पर देख रहे हो कि क्या हो रहा है, यहाँ पर व्हाट इज हैपनिंग हियर द अभी समझते हैं, पहले एक और एग्जांपल लेते हैं, जस्ट टेक लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ओके, एंड देन वी अंडरस्टैंड दिस। सो हियर अनदर एग्जांपल, मीथेन का रिएक्शन करा रहे हैं हम ऑक्सीजन के साथ, मीथेन रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, देन व्हाट इज फॉर्मिंग हियर, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस वाटर बनता है, प्लस वाटर बनता है, okay. So can you observe what is happening in these equations, okay, can we observe what is happening in these equations? Here there is release of hydrogen, releasing, okay, release matlab hydrogen is removed, and oxygen is still there, then it is called, what do we call it, oxidation. Then it is also oxidation because hydrogen is removed here. Can you understand? ऑक्सीजन अभी भी है, ऑक्सीजन का एडिशन अभी भी है, ऑक्सीजन अभी भी है, ओनली व्हाट इज रिमूव्ड,
hydrogen. That's why I'm calling ki when hydrogen is removed, then it is also oxidation. Okay, similarly here, hydrogen is added here. Hydrogen is added here. Okay, you can see hydrogen is added here. H2 is added here. Addition. So addition of hydrogen is what? Reduction. Addition is of hydrogen is what? रिडक्शन. क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन अभी भी कार्बन के साथ हट करके, यहाँ पर देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन हट करके किसके पास चला गया है? हाइड्रोजन के साथ बना लिया बॉन्ड. किसके साथ बना लिया? हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पर ऑक्सीजन रिमूव हुआ कार्बन से ऑक्सीजन रिमूव होकर किसके पास चला गया? हाइड्रोजन के पास. तो रिडक्शन हुआ और हाइड्रोजन ऐड हो गया. कार्बन में हाइड्रोजन का एडिशन हो गया. देन इट इज ऑल्सो रिडक्शन. डिड यू गेट इट नाउ? वन मोर एग्जाम्पल एंड देन वी टेक इट अहेड. यहां पर देखना, यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन जो है हमारा अभी हाइड्रोजन के साथ है, अब ये रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ आ रहा है. तो ये देख सकते हो यहां पर क्या हुआ है? एडिशन हुआ है. हियर द एडिशन इज देयर, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन. एंड यू कैन सी पहले हाइड्रोजन कार्बन के साथ था, अभी क्या हो गया? हाइड्रोजन अलग हो गया, सेपरेट. तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हियर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हियर and reduction of what? Hydrogen here, and therefore it is called overall oxidation. This is called oxidation. So did you get? अगर मैं बोलता हूं कि चाहे तो हम हाइड्रोजन को हटाएं या फिर ऑक्सीजन को ऐड करें, सो द रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन. या तो फिर हम हाइड्रोजन को ऐड करें एंड ऑक्सीजन को हटाएं, देन इट इज कॉल्ड रिडक्शन. So did we get it, guys? Do we have the understanding of it? समझ में आया? Yes, I would love to see the chat. Like, you know, okay, perfect. Everyone is seeing, got that. So are we clear here? When I'm saying, one more time I'm going to explain this. So here, as I said, कि क्या हो रहा है? Oxygen is added and hydrogen is removed, so it is oxidation. When oxygen is removed or hydrogen is added, then it is reduction. Then it is reduction. Then it is called reduction process. Okay. So Ajit has a doubt, I think. What we will consider if in the reaction oxygen is removed and hydrogen is also removed? Okay, that's a great, that's a good question, Ajit. Don't worry, I am going to clear that for you. Okay, I am going to clear all your doubts here. Okay, so let's go ahead and take few more examples and understand. Okay, let's take some examples. Okay, so as I said, यहाँ पर let's go back again and understand with the same examples here. When I take 2 mg magnesium and reacting with it oxygen, then tell me which reaction is this, whether it is oxidation or reduction, and what will be the product of it? Yes, and what will be the product of it? Yes, guys. Oxidation. Okay, Ajit is saying it is oxidation. And what will be the product, Ajit? 2 MgO2. Okay, perfect. It is going to be 2 MgO only, because 2 दोनों में वैलेंसी सेम है तो वो कैंसिल हो जाएंगी. So this is magnesium oxide. What is happening here? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है. देख सकते हो ऑक्साइड बन रहा है. ऑक्साइड, ऑक्सीडेशन हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है इसमें. ओके, सो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है एंड दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन प्रोसेस. दिस इज व्हाट? oxidation. This entire process is what? Oxidation, because addition of oxygen. Another example, 4Na sodium is reacting with oxygen, then it is what? This is again Oxidation. 2Na2O, and this is again nitrogen Oxidation. oxide, Oxidation. and this is again oxidation process. Oxidation. It is still oxidation process.
because here again the addition of oxygen is taking place here. Okay, is that clear? Now let's understand it डिफरेंट वे, थोड़ा सा अलग समझते हैं. अभी आपने बोला, मैंने बोला कि ये ओल्ड डिफिनीशन है. ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल इज द ओल्ड डिफिनीशन. ओके, न्यू डिफिनीशन इज डिफरेंट. न्यू डिफिनीशन इज थोड़ा सा डिफरेंट, एंड दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. ओके, दैट इज अबाउट इलेक्ट्रॉन शेयरिंग. सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट नाउ. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पर क्या हो रहा है समझते हैं. ठीक है. सो Mg जो है हमारा मैग्नीशियम है, उसकी वैलेंसी है 2. It has 2 valency because it has the atomic number of 12. So 2, 8, 2, it has the valency of 2. Guys, please keep yourself muted. When you are speaking, then definitely unmute yourself. Till then, just keep yourself muted when you are not sharing anything. Otherwise, it will create two voices and disturbance for everyone. Okay, I hope you understand that. So when you are speaking, when you are sharing, please keep yourself unmuted and then you go back to mute. Okay, that's great. Thank you so much. Now, so what is happening here? Let's understand. Okay, so इसके दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जा रहे हैं? Those two electrons are going with the oxygen, and oxygen का, okay, 1 second. Okay, so and oxygen's valency is what? Its atomic number is 8, that is 2 6, that is 2 6. तो इसके पास कितने होंगे? 6 valence electrons होंगे. That means it needs 2 more electrons. That means it needs 2 more electrons. Okay, it needs 2 more electrons. That is why it is reacting with the magnesium. So what is happening here? Oxygen is added with the magnesium, but what is happening in terms of electrons? Can anyone guess? Whoever guess it, I will give a chocolate. Pakka, it's a chocolate question. What is happening with the magnesium? How will you define that? What will you say about anything about magnesium? It's Are they becoming saying octet. addition of electrons? Anyone else? Magnesium become octet. Uh, who is that? Sorry? भैया मैग Prem. Prem. Okay, magnesium is saying, Prem is saying कि oxygen get the octet. Okay, Siva is also saying addition. Ajit, can you, what were you saying? भैया oxygen will give 6 electrons to magnesium and it will become octet. Okay, guys, do we remember that if the valence electrons are 4 or the more than 4 or more than 4, then it takes the electron, not donates. And if it is less than 4, then it takes donates the electron. So here what is happening? Magnesium is, no one is answering. Okay, I'm not going to give the chocolate to anyone then, if you remember. Okay, so I'm not getting the answer for it. Then no. Okay, Ashram is saying magnesium is donating electron. Okay, so what is going to happen here is that oxygen is going to take the electrons and magnesium is going to lose the electrons. Okay, so loss of electrons. What will you say it? Loss of electrons. What is happening here? Loss of electrons for magnesium. Magnesium is losing the electrons to oxygen. Okay, magnesium is losing the electrons to oxygen. And you can find another definition for oxidation is what? Loss of loss of electrons. Loss of electrons. Okay, loss of electrons here. Losing the electrons, or the you can call it loss of electrons here. Did you get that? We'll take more examples to understand this. Guys, did you get this? What did I say? That element is losing the electrons to oxygen and oxygen is added to the element. So here oxidation is taking place with the addition of oxygen, and we can make it another definition as that is loss of the oxygen. Guys, please keep yourself muted when you are not speaking, otherwise it will disturb. Okay, when you are not speaking, please keep yourself muted. When you have to share, please come out and share. I would love to
hear from you. Okay, thank you so much, guys. Okay, let's take another example. Okay, sodium. Who can tell me what is the atomic number of sodium and what is the valency for sodium? 11. Okay, perfect, Ajit. So sodium has the atomic number of 11. Okay, I will just write Valency 11 here. 11. That means it is 281. It has 281. valency So it has only one electron to share. Okay, it has one electron to share. And oxygen, since oxygen has two valency of 2, so यहाँ पर क्या होगा, Na के दो आ जाएंगे, because two sodiums will be needed to complete the oxygen's octet here. So what is happening here? Just understand what is, I'm going to say this again. Okay, very carefully understand. So what is happening here? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है सोडियम में, तो बन रहा है सोडियम ऑक्साइड. ओके, सोडियम ऑक्साइड बन रहा है. ठीक है, समझना. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. इस प्रोसेस Oxidation. को ऑक्सीडेशन बोलते हैं. नाउ what else is happening here, that sodium is losing its electrons. Sodium is losing its electrons. Sodium is Reduction. losing its electrons, and that is another definition of oxidation here, that losing. Okay, guys, please keep yourself muted. I because what is going to happen in the recording now, there will be two voices coming otherwise. Okay, if you don't keep yourself muted when you are not speaking. Okay, otherwise two voices will be coming out and you won't understand that recording part. Okay, so let me go ahead. भैया Yes, Ajit. भैया नोट नहीं समझ में आया. Okay, it's fine, let me take it again. So what is happening, understand, just understand. सोडियम क्या कर रहा है, अच्छा बताओ. Oxygen has the valence 6 electrons. Oxygen's valence electrons are 6. Valence electrons 6. Valence electrons. Okay, so the valency is what? It needs 2 more electrons to complete. It needs 2 more electrons to complete its octet. It needs 2 more electrons to complete its octet. That's why sodium is oxygen is non-metal, because it takes the electrons. It takes the electrons. Tell me, what will be easier, to donate 6 electrons or to take 2 electrons? What will be easier for it? To take 2 electrons, because it Take two cannot donate electrons. 6 electrons. It will take 2 electrons, right? It will take 2 electrons. And for sodium, its valence electrons are 1. Its valence is what? 1. Valence is what? 1. What will be easier for sodium, to take to donate 1 electron, or to take 7 electrons to complete its octet? It will donate. Sodium will donate. So what is happening, whichever element is donating, that means उसके पास से वो उतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, राइट? उसके पास से उतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, राइट? गॉट इट? सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम के पास से उतने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, किसको? ऑक्सीजन को जा रहे हैं. सो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. ऑक्सीजन ऐड हुआ सोडियम के साथ. ऑक्सीजन ऐड हुआ सोडियम के साथ. ओके, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हुआ, लेकिन सोडियम साथ ही साथ ने लूज किया इलेक्ट्रॉन्स को. सोडियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. सोडियम इज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, किसको? ऑक्सीजन को. So one more definition for oxidation, the new concept has come here. And what is that? That oxidation is also a process of losing electrons by the element to the oxygen. Okay, oxidation is also a process of losing their electrons to the oxygen, and then it is also, this process is called as oxidation. Another definition has come as, the new definition I would say, when I would simply say कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कि element loses its electron to the oxygen, and losing of electron here is what? Oxidation. Losing of electron is what? Oxidation process. Are we clear with that now? Yes. Got it? So another definition कैसे बना? जैसे हमने बोला ऑक्सीडेशन क्या है, तो ऑक्सीजन तो ऐड हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बट एट द सेम टाइम लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर द एलिमेंट. ओके,
एलिमेंट ऑक्सीजन को लूज करेगा, तभी तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, राइट, ऑक्सीजन उसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू नो दैट बॉन्ड कैसे बनता है, मेटल और नॉन मेटल्स का बॉन्ड बनता है, राइट, कंपाउंड उन्हीं का ही बनता है ना, राइट, क्योंकि अगर सेम हो जाएंगे, मेटल मेटल एक जैसे हो जाएंगे तो उनका नहीं बनेगा, राइट, पॉजिटिव पॉजिटिव आयंस का नहीं बनता है, वी नो दैट, राइट, हाउ डू दे रिएक्ट विथ ईच अदर, ओके, so is that clear for everyone now? Quickly let me know Yes. if that is clear. Perfect. So we can go ahead and I will just write this process. I will write this here as well. Okay, I will write it here. Uh, I'll just take the different color. Okay, I will write it. I'm writing it. Element. Okay, guys, please keep yourself muted if you're not speaking. How many times do I have to say this? Please keep yourself muted if you're not speaking. Otherwise, there will be two voices in the recording. Okay. Element loses electron, and this is what? Oxidation. And this is what? Oxidation. ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है और एलिमेंट का ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, सो दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. इज दैट क्लियर perfectly for Yes. everyone? Is that perfectly clear, guys? Yes. यहां Yes. पर क्या हुआ है? ऑक्सीजन प्लस हुआ है. ओके, आई विल नॉट टेक दिस फॉर नाउ, अभी के लिए हाइड्रोजन वाला नहीं लेंगे यहाँ पर डिफिनेशन, हाइड्रोजन वाला अनदर एग्जांपल में आता आएगा, तो आई विल शेयर दैट देयर. Okay, let's go ahead and understand more with the examples. Let's take some more examples as well. Okay, we are not keeping ourselves muted, guys. We are not keeping ourselves muted. Okay, now let's take some examples, a few more examples, and there we can understand what is happening. Okay, so let's take another example, that copper oxide is reacting with the hydrogen. Copper oxide is reacting with the hydrogen, and what is forming here, since you know that hydrogen is more reactive than oxygen to, sorry, यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव है, एलिमेंट है, दिस इज मेटल, electropositive in nature. Since hydrogen is non-metal, but hydrogen has the positivity in nature, because it donates one electron, because it donates its electron. I don't understand why people are not keeping themselves muted, because I have said this number of times now that it is going to create two voices for all who are going to watch the recording later. Metal electropositivity, and this also has the electropositivity, so they cannot form the bond. It's simple, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं यहाँ पर, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं यहाँ पर, कि they cannot form the bond because metals do not form with the metal, they replace the metals. Okay, they replace, and metals and non-metals they form the bond. Okay, electropositive और electropositive bond नहीं बनाएंगे, they will repel basically, ऐसे समझो, मैग्नेट की तरह समझो. ओके, सेम पोल्स वाले बॉन्ड नहीं आ सकते, अट्रैक्ट नहीं करेंगे, अपोजिट ही अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट वाले मैग्नेट के कॉन्सेप्ट समझ सकते हो. तो सिमिलरली व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज दैट ऑक्सीजन इज व्हाट? इलेक्ट्रोनेगेटिव. Oxygen is what? Electronegative. Now, since hydrogen is more reactive than copper, तो अभी हाइड्रोजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा? अकेला रह जाएगा यहाँ पर. तो क्या बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट? क्या निकल के आएगा हमारा? H2O. ये यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना लेंगे. नाउ what is happening here? Tell me, which is the what is reducing here and what is adding here? चलो बताओ मुझे, कोई भी गेस करता है इसमें क्या है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कौन सी प्रोसेस हो रही है? Yes guys, anyone? Let's hear from some of you. भैया रिडक्शन.
Ajit is saying reduction. Let me see in the chat box. Okay, no answer Oxidant is yet. reduced. Oxidant oxidant is reduced. What else, guys? Oxidant is reduced Thank from you, Prem. copper. Prem is saying oxygen is reduced. Now you can go back to mute, everyone. Okay, Akash is saying reduction of oxygen from copper. What else is happening? If you have not noticed, I am noticing Yes, sir. something else as well. Okay, so here we go. Here, definitely oxygen is reduced. Definitely oxygen is reduced. Oxygen remove हुआ है. Removal of oxygen. यहाँ पर देख सकते हैं removal of oxygen, and this is the process of reduction. This is the process of reduction. But कुछ और हो रहा है यहाँ पर. एक चीज और हो रही है यहाँ पर. And what is that? हाइड्रोजन के साथ Oxidation. ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. हाइड्रोजन ऐड हो रहा है. कंपाउंड बना रहा है. हाइड्रोजन इज फॉर्मिंग अ कंपाउंड. Yes. Okay, so what is happening here? Hydrogen is added. Hydrogen is added here. And when hydrogen is added, what do we call it? That is also a process of reduction. Oxidation. No, when hydrogen is added, that is a process of reduction. Yes, When yes. Sorry, oxygen is sorry, added, sorry. that is opposite था. अगर ऑक्सीजन ऐड हुआ तो हाइड्रोजन रिमूव होगा. अगर ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो हाइड्रोजन ऐड होगा. Okay, so this is a complete process of what? Reduction here. लेकिन यहां पर एक चीज और समझ दे रही है हमें. एक और चीज समझना है कि पेयर में होता है. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा पेयर में होता है. कभी भी एक ही चीज रिएक्शन में नहीं होती है. दे आर ऑलवेज ऑकर इन पेयर. सो समथिंग इज, इफ समथिंग इज रिमूव्ड फ्रॉम हियर, देन समथिंग इज आल्सो एडेड हियर. देन समथिंग इज आल्सो एडेड हियर. कुछ ना कुछ ऐड भी हुआ है. तो दिस प्रोसेस इज, यू कैन कॉल इट एज ऑक्सीडेशन. इस प्रोसेस को, ठीक है. लेट्स, ओके, मैं एक काम करता हूं, मैं कुछ और एग्जांपल्स देके आपको समझाता हूं, ठीक है. लेट मी गिव यू सम अदर एग्जांपल्स एज वेल. Okay, let's take another example, and that example is here. I'm writing it here. Methane है. Methane is reacting with the oxygen. Okay, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना है, and the product is forming as carbon dioxide plus water. Now you can, if you can guess which process is happening here, oxidation or reduction, what is happening here? Is it oxidation or reduction? What is happening here? Let's see who can guess this. Yes, guys. Anyone? Hair reduction. Ajit is Both saying reduction. reduction. Let's hear from other people as well. I'm Both. looking in the chat Both. box. Sani is saying reduction, or Fiza is saying oxidation. More people. Both. Both. Prem is saying both. Let's hear from more people as well. I'm waiting for other people to respond. Yes, guys. Anyone else? Kunal, Yes. Sanya, Fiza, Divya, Lakshmi, Pradum, Aditya. A lot of people are there in class. Anyone else? Okay, Sanya, you didn't say reduction. Okay, it was the previous answer. Okay, great. Fine. And guys, let's respond to this one. Yes. Okay, some we have. All. Sabaj is saying oxygen. Lakshmi is saying oxygen. Prem, you have already answered. Okay, Reduction. let's see. Let's see what happens here. Let's see. Okay. Now, so what is happening here? यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन था. कार्बन के साथ हाइड्रोजन था यहाँ पर. यहाँ पर कार्बन के साथ हाइड्रोजन नहीं है. रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है ये. क्या है ये? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है. ठीक है. तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है. यहाँ पर ऑक्सीजन अकेला था. अभी ये कार्बन के साथ आ गया है.
कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, तो दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अगेन दिस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अनदर थिंग, और क्या दिख रहा है यहाँ पर? क्या कुछ रिडक्शन दिख रहा है यहाँ पर? हाइड्रोजन ऐड भी तो हुआ है यहाँ पर, इस वाले कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड भी तो हुआ है। हियर हाइड्रोजन इज एडेड, hydrogen has formed, the hydrogen is added with the oxygen. Yes. Yes. Oxygen, hydrogen is also added here. Okay, so as I said earlier, every process, every reaction, okay, as I said earlier, every reaction is a pair of reduction and oxidation. Both. Every reaction has a pair of oxidation and reaction, दोनों पेयर में होते हैं, कभी एक कोई भी अकेला एक नहीं होता है। मैं आई विल गिव यू द एग्जांपल फॉर दैट, वेरी सिंपल एग्जांपल फॉर दैट। एंड व्हेन such when such reactions are there where removal of, guys keep yourself muted, removal of hydrogen in this addition of oxygen, okay, यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, सो व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट, सॉरी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन is Reduction. what, reduction. Both So happens. both are happening, Yes. so both are happening, oxidation and reduction both are happening. And when in an reaction both the things are happening, then it is called redox reaction. Then Redox. we call it redox reaction, we call it redox. I will write it with RE. different colors so you can understand it. We call it redox reaction. रिडॉक्स रिएक्शन मतलब कि उसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, देन वी कॉल इट रिडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, then we call it redox reaction. Okay, if you have got this, quickly give me a thumbs up in your chat box, भैया and then I will give you simplest example to make you get this clear. Okay, I will take another simplest, very simple examples to get this complete, get this clear for everyone. Is that clear for everyone? भैया Yes, Ajit. can you take the example of NaOH? Yes, Ajit, I will take the other examples as well. I'm just waiting for people to respond in the chat box if they are clear with this or not. Example of NaOH, sodium hydroxide. Yes, Ajit, I got your point. I'm just waiting for people to respond in the chat box. Okay, thank you so much, Aditya, Sabaj, Prem. Great. Okay, let me take first another simple example. Let me make you just let me just clarify this, and then I will take other examples too. Just give me a second. I will just add a few slides. Okay, we go back. Okay. Just keep yourself guys moving. This is getting difficult. Okay, so 2 mg, I'm taking the example of again magnesium oxide, and just to make you understand, okay, just to make you this clear, understand about this. And this is reacting with oxygen. It is 2 mgo. Now I am saying this is a redox reaction. Can anyone explain how this is an redox reaction? I am saying redox reaction means both oxidation and reduction, both oxidation and reduction. Can anyone explain how this is a redox reaction? I'm saying both are there. Yes, if anyone भैया can explain me that. भैया Yes, Ajit. be- because one oxygen is added to 2 MgO and one oxygen is removed. Okay, what else? What else, guys? Anyone else?
Another example for redox reaction is this. Okay, I will explain this as well. Another example for redox reaction is this. Zinc oxide is reacting with carbon. Zinc oxide reacts with carbon, and it forms the carbon here. Okay, okay. So जिंक गेट सेपरेटेड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्मिंग. मतलब जिंक को हमने यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, उसमें फिर कार्बन के साथ रिएक्ट कराया, तो जिंक कार्बन मोनोऑक्साइड इज फॉर्मिंग हियर. सो यू कैन सी हियर व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया. सो दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, रिडक्शन. और इसमें ऐड हुआ है, तो दिस इज ऑक्सीडेशन. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. Okay, I was waiting if can someone explain me how. Another example of reduction reaction is this. Hydrogen is reacting with sulfur, so it forms H2S. Okay, so this is another example of reduction. Okay, it's fine if you don't get both reactions. If you're not getting how oxidation reduction happening at the same time in one reaction, it's fine. I will take more examples and get this make you understand in a few minutes. Okay, for now I'll just go ahead and take another example here. Okay, let me first. I think I have taken the example of oxidation and reduction both here. I'll just quickly explain this. यहाँ पर ZNO से ZN बना है, so this is reduction. This is nothing but the reduction. And here carbon has become carbon monoxide, so here the oxidation. So that's why it is both oxidation and reduction. Okay. I have few more examples that I will give you as homework later after the class. And I think I'm clear with that you have understood. I'm just making my sure that if you have understanding of redox, oxidation reaction, reduction reaction, Yes. and electron losing. If the electrons are losing, then it is oxidation. If electrons are gaining, then it is reduction. Yes, guys, are we clear with that? Bhaiya, Yes. you need to explain the example of MgO2. That's what I said. I will take few more examples and I will get that clear. Okay, for now I will give you more examples and you will take some time and we'll discuss this in the chat box. Okay, so here is carbon is reacting with the ferrous oxide, that is Fe2O3, and here the product is, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो गया और Fe सेपरेट हो गया है, so that is 3CO2 बन गया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है. Now tell me what is reducting here and what is oxidating here. How this is an redox reaction. Okay, people are not keeping themselves mute. Prem, please keep. Bhaiya, in iron oxygen is removed. Yes, guys, anyone in the chat, let me see the chat box if anyone is responding there. Bhaiya, in iron oxygen is removed, it is reduction. Lakshmi, And carbon oxygen is added, it is oxidation. Removal of oxygen and addition of oxygen. okay, guys, I'm waiting for more people to share their answers. Yes, anyone? Okay. Okay, ठीक है. It's fine. I'll take more examples if I'm not hearing from a lot of people. Okay, Lakshmi is saying oxygen is reduced from Fe2O3 but added with C to form compound. So both are taking place. Perfect. Thank you, Lakshmi, for sharing. So here I got three responses from Ajit, Prem, and Lakshmi. So here what is happening?
that oxygen is added here to carbon. Oxygen is added here to carbon. So this is oxidation. This is oxidation. And ferrous iron has lost the oxygen, so this is reduction. You can understand this with the example, with understanding of electrons as well. You can make the, you know, uh, you can write the electronic configuration, and you can see which is losing the electrons and which is gaining the electrons. I can give you more examples here that you can understand on your own, or you can write it somewhere, so you can, you know, write it in a notebook for the as the classwork, and you just do it later only. So another example is this NH3 ammonia. This is ammonia NH3, एंड ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करना है अमोनिया को. सो व्हाट इज फॉर्मिंग? अमोनिया गेट सेपरेट, सॉरी, नाइट्रोजन गेट सेपरेटेड, नाइट्रोजन रह जाता है, एंड ब्रोमीन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन. Hydrogen. So you can also get this with the example of what is happening here. यहाँ पर हम ऑक्सीजन के टर्म्स में ना लेकर हम यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? We are understanding with the help of hydrogen. So since we did not have many examples of hydrogen, so this is a good one. So here what is happening? Reduction of hydrogen and reduction removed. Okay, hydrogen is H2 removed. So when H2 is removed, then this is called oxidation. अगर हाइड्रोजन हट रहा है, then it is called oxidation. And here H is hydrogen is added, H2 is added here, hydrogen is added here, then it is reduction process. Reduction. Again it is the example of redox. Again it is an example of redox. So this can be another example. One more I can take here. This can be your homework as well, that you can do on your own later. And this is MnO2 manganese. Okay, this is not magnesium, this is manganese. MnO2, manganese oxide, plus it reacts with the hydrochloric acid, that is HCl, hydrogen chloride, and it forms manganese chloride, Cl2, plus water and chlorine separated. You can do this on your own, and you can share the answers later after the class with me, you know, on WhatsApp group or like the personal chat. So you can do this as your homework, how it is oxidation and reduction process as both. Okay. भैया send this on the group. Yes, I will share this on the group later after the classroom. Okay. Take a screenshot. Now I was saying I will take the example of simplest example in the like previous slide only, how this one is an redox reaction. Okay, now I'm going to explain you this now. Okay, and I hope you have understood. So what is happening here, let me tell you. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मैग्नीशियम में ऑक्सीजन आ रहा है, ऐड हो रहा है. सो दिस इज ऑक्सीडेशन. दिस इज ऑक्सीडेशन. नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? ऑक्सीजन यहाँ पर डायटोमिक था, यहाँ पर डायटोमिक टू एटम्स मिलके एक ऑक्सीजन बना, डायटोमिक था, यहाँ पर दो थे, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है. ओके, ऑक्सीजन का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है, यहाँ पर देखो एक ही अभी बचा हुआ है. सो दिस इज व्हाट? रिडक्शन. एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन. कुछ ऐड हुआ है तो कुछ हट भी गया है. एंड एज आई सेड, सर, रिएक्शन विल ऑलवेज हैपन इन पेयर. If any reaction is taking place, then it always happen in pair, that is oxidation and reduction both. Oxidation and reduction both. Let me take another example, and that is here, carbon is reacting with the oxygen and carbon dioxide is formed, and we can define how it is reduction or oxidation reaction. So you can see carbon is added to the oxygen, oxygen is added to the carbon, so it is oxidation. Then it is oxidation. And since, okay, Oxygen is removed. but इस वाले
पार्ट से, इस वाले यहाँ पर समझ सकते हो, इस वाले रिएक्टेंट से ऑक्सीजन हट के इस वाले बस में एक कंपाउंड बना दिया है. सो इट इज अगेन रिडक्शन प्रोसेस फॉर ऑक्सीजन. दिस इज अगेन रिडक्शन फॉर ऑक्सीजन. ऐसे समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पर सेपरेटली ऐसे था, ठीक है, इस वाले पार्ट से, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हुआ तो इस वाले पार्ट से ऑक्सीजन हट गया है. सो दिस इज अगेन रिडक्शन फॉर इट. सो दैट इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट, how it is redox, how it is an redox reaction. Okay. But I not understand. And now I'm going to take a few more examples, and if that gets clear for everyone, okay, for redox reaction only, where both happens, redox, oxidation and reduction, where both happens. Okay, I will write it here. So photosynthesis everyone knows. What happens? Again, it is an example of redox reaction, because there is an exchange of, this is the real life example. Okay, another thing, the cell phone में भी क्या होता है, जो बैटरी चार्ज होती है उसमें भी रेडॉक्स रिएक्शन होती है. यू कैन जस्ट गूगल इट, यू कैन थिंक अबाउट इट हाउ दैट हैपेंस. ओके, आई विल लीव दैट अप टू यू. व्हेन वी रन, ओके, during the running also, during the running also, the redox reaction takes place. During the respiration, the redox reaction takes place. एंड ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते तो ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, लेकिन हाइड्रोजन कहाँ जाता है, यू कैन जस्ट think about it and you can let me know that in later after the classroom also. So again, that is an redox reaction, and how that happened you can think about it. Okay, so redox reaction here is simply means oxidation ka addition, but it also means the losing of electrons or gaining of electrons. If it is gaining, then it is a reduction. If it is losing, then it is oxidation. Or if it is gaining hydrogen, then it is what, reduction. Or if it is losing hydrogen, then it is oxidation. So I'll quickly summarize that for everyone now. Okay, and I will make a short note for everyone, and that can, I think that can easily, that can help you all to understand it here. And then I will take more examples. Okay, this is not done, I will take more examples to make you get this clear. Okay, so I'm writing here oxidation, and we have three things to know about oxidation, and here reduction. The things we can know about this now is, so in oxidation what happens, addition of oxygen, addition of oxygen to any element, remember, to any element. This is first point. Another part, how else can we understand, or we can write it like removal of hydrogen, removal of hydrogen from any element, remember, from any element. Okay, किसी भी एलिमेंट और कंपाउंड में ऑलरेडी अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है तो अगर उससे हट रहा है तो दैट इज ऑल्सो रिमूवल. अनदर डिफिनेशन फॉर दिस इज, और द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओके, लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, अगर एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है देन इट इज व्हाट, क्यों लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, टू गेन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, to gain higher oxidation state, to gain higher oxidation state, तो वो लूज करता है. What is for reduction here, I'll just use a different color to write there. The first one is what, in reduction what happens in reduction, addition of hydrogen, addition of hydrogen to any element, to any element. The second one is
रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन अपोजिट टू द ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन है उसका बिल्कुल अपोजिट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एनी एलिमेंट, from any element. And the third one we have is gaining electrons. We could not have the examples for this, but you definitely you can take some examples and understand this. Gaining electrons, gaining electrons to have lower oxidation, reduce हो रहा तो lower oxidation state कहलाएगा ये. And this is the simplest way to understand this. Another, for example, I can give you here for one more reduction process. Here is the one example I can give you right now is that nitrogen is non-metal and it has diatomic. It reacts with hydrogen and it becomes it gaining. अब यहाँ पर क्या होगा, gaining होगी. Okay, gaining, sorry, addition of hydrogen हो रहा है यहाँ पर, addition of hydrogen, and this forms ammonia, NH3. It forms ammonia. This is called ammonia gas बोलते हैं इसको, liquid form में भी होता है, ठीक है, NH3. Here addition of hydrogen, here the addition of hydrogen is taking place. Okay, or the example of reduction, this is the example of reduction here, reduction process के example I'm taking here. Another example for reduction is Fe2O3 फेरस ऑक्साइड. मैंने ऑलरेडी ये सारे आई थिंक एग्जाम्पल ले चुके होंगे, फिर से रिवीजन हो जाएगा आपका. Fe2O3 प्लस कार्बन के साथ अगर इसको रिएक्ट करते हैं तो याद रखना कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और Fe आयरन रह जाएगा. सो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, हियर इट वाज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and here it was removal of oxygen. So both are what, reduction. Both are what, reduction process. दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, reduction बोलेंगे. Removal of oxygen, both of them will be known as oxygen. Another part here to understand is, देखो समझना जरा, यहाँ पर जो हमारा यहाँ पर Fe है, आयरन है, इलेक्ट्रॉन के उसमें भी समझा देता हूं मैं. आयरन है, सपोज करो ये आयरन हुआ और ये ऑक्सीजन के साथ एडेड है, दो ऑक्सीजन के साथ एडेड है, ठीक है, Fe2O3 ऐसे दो तीन ऑक्सीजन के साथ एडेड है. यहाँ पर आयरन दो है और ऑक्साइड बना रहा है, और यहाँ पर कार्बन के साथ हमने रिएक्ट कराया इसको, कार्बन के साथ. सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज आयरन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन. Fe को यहाँ पर देखो ऑक्सीजन उसका हट गया, जितना भी उसने ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दिया था तो ऑक्सीजन हट गया, तो उसके वापस इलेक्ट्रॉन उसको वापस मिल गए. तो आयरन को क्या होता है यहाँ पर, अभी क्या बन जाएगा, आयरन मेटल था, Fe था, अब वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल गए, तो क्या बन गया यहाँ पर. 1 सेकेंड, आई विल एक्सप्लेन यू. देखो समझो, यहां पर ऑक्सीजन आयरन ने, आई विल जस्ट चूज द डिफरेंट कलर. हियर ऑक्सीजन वुड हैव शेयर्ड इट्स इलेक्ट्रॉन्स विद द ऑक्सीजन. हियर iron would have shared its electron with the oxygen, and let me just make the electronic configuration for this. So iron has the atomic number of 26. Iron's atomic number is 26. I will write it like this. 26 means क्या होता है, 2 8 18 I can't take, then I can take 8 again, or 18 I can take, no, and then 8 again, no. How is that happening? 26 is the atomic number, then it has 2 8, and if I write 18 then it is again already 26. Then I cannot take 18, but I can take 8, then it will be 18, and last, can someone help me with the electronic configuration of
Yes. Anyone? Okay, this has a rare combination. Okay, I got this. It has a rare combination, that is 14 and 2. I don't know how this is happening. Okay, I will check this and get back to everyone. Okay, so that is why it is kept as Fe2 के साथ रखा जाता है इसे, because it will donate. Okay, got it. So the okay, it has a 14 in the third shell. Okay, I will see to it how that 14 comes here, but it donates 2 electron definitely. तो इसीलिए Fe2 3 यहाँ पे ये लगा है. चलिए ठीक है. ओके, फॉर नाउ हाइड्रोजन इज, तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड आयरन ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स लूज किए होंगे ऑक्सीजन को देकर, तो वापस जब जैसे ही ऑक्सीजन उससे हटा है, तो iron gets their its own electron, it becomes positive. Okay, so here again gaining of electron is happening here. जो आयरन ने यहाँ पर शेयर करके रखे थे और जो लूज किए थे इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन से, वो इलेक्ट्रॉन्स आयरन यहाँ पर गेन करता है वापस, and that's why it is gaining of electrons and it is called as what? Reduction process. Okay, and I think we are done here. Now last we come to this is, okay, quickly let me know if you are clear with the oxidation, reduction, oxidation, reduction, and redox reaction. If you are clear with that, quickly let me know. Yes, Akash, in a reaction there will always be both oxidation reaction. कुछ ना कुछ add हो रहा होगा, कुछ ना कुछ कम हो रहा होगा. So there will always be oxidation and reduction. Definitely. Are we clear here? Okay, perfect. Now we last the last part of so here we complete the oxidation and reduction, and we come to the last part of it, and that is effects of oxidation in everyday life. Okay, I will write it here. Effects of oxidation in everyday life. If you already had pre-reading, can you give me some examples of effects of all, oxidation in everyday life? ऑक्सीडेशन के कुछ अफेक्ट्स क्या क्या है? Yes, anyone? Can anyone give me example of oxidation here? Akash is saying corrosion. Perfect, Akash. And can you define how corrosion will be the oxidation here? Corrosion, अभी अभी हमने एग्जांपल लिया है. The first we have here is corrosion. The first effect we have here is corrosion. Corrosion oxidation का ही corrosion oxidation का ही इफेक्ट है. और क्या है, कैसी रिएक्शन होती होगी कि यहाँ पर कि दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन. Yes guys, anyone? So what happens here is कि फॉर्मेशन ऑफ मैं सिंपलेस्ट पहले पे समझा देता हूँ, फिर मैं आपको लिखता हूँ यहाँ पर. तो क्या होता है यहाँ पर कि कोरोजन इज व्हाट? कोरोजन इज नथिंग बट द नेचुरल प्रोसेस है. इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. एंड ये क्यों होता है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होता है. प्योर मेटल जो आयरन है हमारा, प्योर मेटल है, ठीक है. सब कोरोजन मतलब सिर्फ आयरन का नहीं होता है, कॉपर किसी का भी एलिमेंट का हो सकता है. रस्टिंग इज फॉर आयरन. ओके ओके, सो हियर so it's a natural process that causes the transformation of pure metals to undesirable substances. जो substances हमें नहीं चाहिए उसमें desire उसका मतलब transformation होता है, because you can say it is a harm for the element only. Undesirable substances when they react with the substance with like water or I'm sorry, or air. Okay, so
If I write it in form of reaction, then how would I write it in form of reaction here? I will write it like this कि यहाँ पर सपोज यहाँ पर हम कहीं पे भी आयरन रख देते हैं, ओके, तो ये आयरन है, दिस इज नथिंग बट द आयरन, दिस इज आयरन रॉड, जस्ट इमेजिन एज द आयरन रॉड। सो ऊपर इसके आपको पता है कोरोजन हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, इसके ऊपर वाले पार्ट में क्या होता है कि एटमॉस्फेयर से, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर it gets water, the humidity, you know, the nami, okay, and oxygen, it gets water and oxygen here, okay। तो उसके साथ रिएक्ट करता है आयरन, दैट इज Fe प्लस टू बिकॉज इट हैज द टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो टू डोनेट करेगा तो +2, ओके। तो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन जब वो यहां पर आता है इसके साथ रिएक्शन होती है एंड इट फॉर्म्स द व्हाट डज इट फॉर्म। सो इसकी रिएक्शन ऐसे दिखती है, 2Fe reacts with oxygen, okay, it reacts with oxygen, balance करके, if I write it balanced form, so it looks like this, plus 6H2O, then it forms this ferrous hydroxide, it forms this ferrous hydroxide, and it is the chemical reaction for corrosion of or rusting of iron, corrosion or rusting of iron here, okay, the formation of rust in presence of water and oxygen, okay, फॉर्मेशन ऑफ रस्ट इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर क्या होता है आयरन डोनेट करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो रिएक्शन होती है यहाँ पर, ठीक है, एंड दिस ऑल हैपेंस, बैलेंस करने के बाद दिस इज हाउ इट लुक्स। नाउ आई विल गो बैक। Lakshmi saying iron comes in contact with oxygen and leads to corrosion. Thank you, that's correct, Lakshmi. Another example for this, I just took the example of iron, corrosion of iron or rusting of iron here. Another example, corrosion of copper B. I will share a picture of that with you all in the chat box, okay, in the WhatsApp group, so you can see how the copper gets corroded, okay। corrosion iron में ही corrosion को क्या बोलते हैं हम, rusting, we call it rusting, simply we call it rusting बोलते हैं हम उसे, okay। So is that clear? Yes guys, we have different in book, in the textbook we have the complete process of how iron gets rusted, or the like anode पे क्या होता है, cathode पे क्या होता है, that I'll explain definitely in the next class. For now I would just take the answer here, if that is clear. Let me see the chat box. Okay, perfectly. So I will explain the corrosion and the reaction, this maybe in the next class when we have the revision of it, and I will do this. Just simply one more effect of corrosion is what? Rancidity. Another effect of corrosion, I will just quickly explain this and then I'll go back to corrosion again maybe. Okay, rancidity. This is rancidity. Can someone, does anyone want to go ahead and explain what is rancidity? What is rancidity? Anyone? I'm just seeing in the chat box if anyone. Yes, Ajit. I said I will go back to corrosion. If you can, if you are hearing me clearly. Anyone who wants to go ahead and explain about the rancidity? Yes, guys.
Rancidity. I'm looking for anyone to explain the rancidity here. Okay, Akash Singh, oil reaction with oxidation. Okay, thank you Akash. ओके क्या होता है, मैं बहुत सिंपलेस्ट वे पे समझाता हूँ। जब ऑयल जो होते हैं और फैटी ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल्स होते हैं, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं। जब वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं मतलब कि वो ऑक्सीजन को गेन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है उनकी, ठीक है। सो दे बिकम रैंसिड। रैंसिड हो जाना मतलब देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रैंसिडिटी। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक कोकोनट। देखा है कोकोनट? उसको आप उसको आप ओपनली रख दो, ठीक है, 2 दिन उसको यूज मत करो, मत उसको ड्रिंक मत करो, तो व्हाट विल हैपन? इट विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डेफिनेटली, एंड इट्स टेस्ट चेंजेस, okay, its taste changes, okay, and it and if you keep it for a few more days, its color will also change, and that is called rancidity. that is called rancidity ओके। सो फूड जो हमारा क्या होता है, सिमिलरली मैंने फिर से एग्जांपल फिर से बताऊंगा कि व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड, देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड rancidity. Simplest way, this process is called rancidity. There are a few examples of वनस्पति घी और वेजिटेबल ऑयल में कैसे चेंज होता है, वहां पर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है, तो वो भी एग्जांपल्स हैं that I will definitely take in the next class. I'll quickly once again